Hello everyone, welcome to Shrikaya Academy. So आज आम पढ़ा class 8 science रो chapter 1. Chapter 1 टी होची crop production and management. As we all know that food is the basic source of energy for all the living beings. जेमती plants को पाई photosynthesis रो use हुए food create करिवा पाई तैयारी करिवा पाई सेपरी as animals and living beings cannot prepare their own food, they depend on the plants and other animals to complete their food requirements. So आमे बंचिबा पई आमे संपूर्ण भाबरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हे परिबा नाही. So we need crops to fulfill our food requirement. So आज आमे पढ़िबा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट केमिति आमे शस्य को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिबा एवं तार मैनेजमेंट विषय आज आमे पढ़िबा. So टिक्के बेसिकली आमे मने पकई देबा that plants can make their own food themselves. Green plants synthesize their own food by using sunlight, water, minerals extracted from the soil, and animals have to become dependent on the plants and other animals to complete their food requirement. So why food is necessary for the human body or body of any living organism? Because energy from the food is utilized by the organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. So we get our food from plants or animals or both. So now the question is, since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? As India population, world is second largest population after China. So now the question is, एत्ते संख्यक लोकों को हमें केमिति खाइबा दे परिबा, because we are dependent on the plants and other animals to complete our food requirement, to satisfy our food requirement. So now the question is, how we can provide food to a large number of people in our country. So to satisfy the food requirement for the large number of the people in our country, we have to produce food on large scale. So food has to be produced on a large scale. So in order to provide food for a large population, what we need? We need regular production of the crops and foods which are utilized by the people of India, and proper management of the production of such foods and the distribution of such food to the people. So tinita pillar rahila. The first pillar is regular production of the crops. The second pillar is proper management, how to produce good quality of the crops for the people of the India, and the third thing is the distribution of the crops and the food to the people of India so that we can satisfy their food requirement. So crops production पाई आमको बेसिक रिक्वायरमेंट होची कौन? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. बिकॉज आम जो खाऊ राइस खाऊ, व्हीट खाऊ, एनी काइंड ऑफ क्रॉप्स आम खाऊ, से गुड़ाक सब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस द्वारा प्रोड्यूस करा जाए. सो टिके आम पास्ट को पळेबा कि जेतेबेले लोक माने आमर एंसेस्टर्स माने जेतेबेले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जानी नथिले, हाउ दे वर सैटिस्फाइंग देयर फूड रिक्वायरमेंट. So they were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. तो से खाइबा घर पर प्लेस टू प्लेस विजिट करिया पड़ता से एंड से रॉ फ्रुट्स एंड वेजिटेबल्स खाऊले, से रोसई कर खाइबा जना नाथिला.
They were used to eat raw fruits, vegetables, and by hunting animals for food. Rather, latter part of their life, they know how to eat food properly so they could cultivate the land and produce rice, wheat, and other food crops. Say to our agriculture concept and to cultivate any crops concept start hela. Okay. So ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ପାଷ୍ଟ. ସୋ ରାଇଟ୍ ନାଉ ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲୋକମାନେ ଶିଖିଗଲେ ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ପାର୍ଟରେ. ସୋ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଏ କ୍ରପ୍. ତ କ୍ରପ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିକଜ ବିଷୟର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ରପ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ. ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାୟା ଏକାଡେମୀରେ. We provide classes for CBSE, ICSE and odia medium student class 1 to class 10. And we give special focus on math, science, English, social science, Hindi or Sanskrit. Our address होची न्यू एज कॉलोनी पोखरीपुट भुवनेश्वर. आमर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करबा पई कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे. एवं सीबीएसई, आईसीएसई एवं ओडिया मीडियम स्कूल्स रो सब्जेक्ट्स मानकर फ्री वीडियोस पाइबा पई सब्सक्राइब करंतु श्रीकाया एकेडमी यूट्यूब चैनल को. Please like, share, comment and subscribe our YouTube channel for more study related contents. Please support us to grow. So right now आमे पढ़िबा क्रॉप काहाकु कुहाଯାଏ. When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, then it is called as a crop. माने एक प्रकारर गछ सबु चारा गुड़ाक गोटे जगार जदि एकत्रित होइकी बहुत लार्ज स्केल रे माने बहु मात्रा रे चाष करा जाए, कल्टिवेट हुए चाष करा जाए, ताले सेगुड़ा को क्रॉप करा जाए. जेमति कि आमे देखिबा व्हीट, राइस एगुड़ा सब गोटे जगार बहु मात्रा रे चाष करा जाए सो दैट फूड रिक्वायरमेंट को सैटिस्फाई करा जाय परिबो. तो सेटा को कहा जिवो द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, देन दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप. एटी एग्जांपल देखंतु दिया जायछि क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट. धानर खेत बा चाउलर जो प्रोड्यूस करिया पई जो खेतर प्रयोग करा जायଥାଏ सेटा, राइस रो प्रोड्यूस करिया पई जो खेतर प्रयोग करा जायଥାଏ सेठी सबु जगह रे राइस रो प्लांट्स लगा जायथिबो जोठी कि हम राइस प्रोड्यूस कर परिबा जोथ्रु, व्हीट प्रोड्यूस कर परिबा जोथ्रु, बाकी सब बहुत सारा क्रॉप्स अछि सेटा प्रोड्यूस कर परिबा जोथ्रु. तो सेगुडा सब क्रॉप बोली कुआ जाय. सो क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सो कौन टाइप्स तार गोटे गोटे पॉइंट्स करके आप लिखि दे पारिबे इन नोट्स. सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. एंड ये जो तीन कैटेगोरी रिप्रेजेंट करा गला, they can be classified on the basis of the season in which they grow. माने सीजनल क्रॉप्स सेगुड़ा को कहा जाए. किछिटा क्रॉप थांती जो माने रेनी सीजन रे भलो होंती, किछिटा क्रॉप्स थांती जो गुडा विंटर सीजन रे भलो होंती, किछिटा क्रॉप्स थांती जो माने समर सीजन रे भलो ग्रो करंती. तो सेपरी एमानन को अकॉर्डिंग टू द सीजन डिवाइड करा जायता है. तो सेगुड़ा को कहा जायता है सीजनल क्रॉप्स जो माने सीजन अनुसार जो सब क्रॉप गुडा को प्रोड्यूस करा जाए. सीजनल क्रॉप से गुड़ा कहीं कह जाए बिकज से क्रॉप गुड़ाक प्रोडक्शन आमको डिफरेंट डिफरेंट सॉइल, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट ह्यूमिडिटी एंड डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल आवश्यकता थाए. एज इंडिया रे वेरियस प्लेसेस रही एंड इट इज अ वेरी वास्ट कंट्री. सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट क्रॉप प्रोडक्शन ये करा जाए.
बिकज डिफरेंट प्लेसेस टेम्परेचर ह्यूमिडिटी क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल डिफरेंट थाए सो अकॉर्डिंग टू द रीजन ये क्रॉप्स प्रोड्यूस करा जाए देखिए एवं किसी दिन है आलूर संकट हो जाता ओडिशा ओडिशा आलूर प्रोड्यूस सेते मात्रा हुए जोटा कि ओडिशार सब लोकों प्रोडक्शन टाकू ठीक भाव में कर साटिस्फाई कर तो से आम अन्य राज्य उपर डिपेंडेंट थिलु आलूर प्रोडक्शन की सो सेल्फ सफिशिएंट हाँपाई आलूर प्रोडक्शन आह्वान दिगला राज्य को सो दैट राज्य रे निजे निजे आलूर प्रोडक्शन करा जाय परिबो सो तीनटा जिनस उपर क्रॉप्स प्रोडक्शन डिपेंड करे दैट इज टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन So rich variety of crops grown in different parts of our country. So despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. So दीटा main cropping pattern आमर इंडिया रे follow करा जाए कौन कौन सेटा होची खरीफ क्रॉप्स आ गोटा होची रबी क्रॉप्स सो दुईटा मेन टाइप ऑफ द क्रॉप्स जोटा को आम इंडिया रे कंसीडर करू इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन अनुसार सेटा होची खरीफ क्रॉप्स आ गोटा होची रबी क्रॉप्स सो फर्स्ट आम जाना खरीफ क्रॉप्स कौन देन आम जाना रबी क्रॉप्स कौन खरीफ क्रॉप्स कौन द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन रे जो क्रॉप गुड़ाक भल भाव ग्रो करे सेटा कहुए खरीफ क्रॉप्स सो रेनी सीजन कोटा जून टू सेप्टेम्बर इन इंडिया सो एग्जांपल ऑफ द खरीफ क्रॉप्स कौन पैडी मेज सोयाबीन ग्राउंडनट कॉटन एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज खरीफ क्रॉप्स सो नोट्स आप अंडरलाइन करदे पारे को गुड़ा खरीफ क्रॉप्स तार सीजन कौ मस रू कौ मस लाइक जून टू सेप्टेम्बर एंड खरीफ क्रॉप्स क्या कहुए जो गुड़ाक रेनी सीजन में मेनली करा जाए सो अंडरलाइन ऑल दिस पॉइंट्स एंड मेक ए नोट नेक्स्ट आम जी रबी क्रॉप्स क्या कहुए सो द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन मुझे कहली कि तीन प्रकार क्रॉप्स थाए जोटा कि को गुड़ाक विंटर रे भल हुए को गुड़ाक समर रे भल हुए को गुड़ाक रेनी सीजन में भल हुए सो खरीफ क्रॉप्स रबी क्रॉप्स ये दीटा सीजनल क्रॉप्स को इंपोर्टेंस दिया जाइए तो रबी क्रॉप्स होची कौन द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन विंटर सीजन जोटा शीत दिन में भल भाव में ग्रो करें एंड शीत दिन सीजनटा कौन हो इंडिया रे अक्टोबर टू मार्च सो द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन विंटर सीजन दैट इज फ्रॉम अक्टोबर टू मार्च आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स सो एग्जांपल हो रबी क्रॉप्स कौन व्हीट ग्राम पी मस्टर्ड एंड लिनसेट्स एंड बिसाइड दिस pulses and vegetables are grown during summer at many places सो यहाँ हो गला विंटर और रेनी विषय लिखिदेला ये तले भी लिखिदेला कि समर सीजन में विभिन्न प्रकार पल्सेस एंड वेजिटेबल्स भल भाव में ग्रो हुए जमीक आम जाचे मैंगो वगैरह समर सीजन में बहुत भल भल ग्रो हुए मैंगोर प्रोडक्शन बहुत भल हुए तो सेमती बहुत प्रकार जिनस अच्छे जोटा समर सीजन में बहुत भल भाव में ग्रो हुए एंड प्रोडक्शनटा भल हुए सो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन सो सबुठार बेस्ट एजुकेशन पाई श्रीकाय एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक शेयर कमेंट करंतु एनी डाउट इन दिस क्लासेस यू कैन आल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड कैन आल्सो कॉल मी टू जॉइन श्रीकाय एकेडमी प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल श्रीकाय एकेडमी फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस नेक्स्ट क्लास रे आमे हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड वीडियोस नहीं कि आसबू सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर एजुकेशनल वीडियोस एंड बेस्ट एजुकेशन पाइबापी जॉइन करूँ श्रीकाय एकेडमी आमर लोकेशन पोखरीपुर भुवनेश्वर एंड आमर एकेडमी को जॉइन करने कॉल करूँ 8114789448 नंबर टी आउे नोट डाउन करनी 8114789448 नंबर रे थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस थैंक यू फॉर वॉचिंग